Hello students, Jinalisha welcomes you all on behalf of Saraswat International Academy. Today we will begin with the last part of the chapter Biotechnology Principles and Processes. So students, in the previous videos we have studied regarding the tools of the biotechnology. Say for example, we have studied regarding the various enzymes, and one of the most important enzymes was the restriction enzymes. Then next was the cloning vectors, right? So we have studied regarding the certain facilities which are required to facilitate the cloning within the vector. So after cloning, we know that a recombinant DNA can be formed. So now how this recombinant DNA can be inserted into a suitable host. So let us begin with the topic competent host, which means it is a technique for transformation with a recombinant DNA. So we know that DNA is a hydrophilic molecule and it cannot pass through the cell membrane. DNA कैसा molecule है? Hydrophilic. And normally the hydrophilic molecules cannot cross the cell membrane. What is the reason? कि मेनली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक है. एंड डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक. डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन. So first of all, the membrane should be made in such a way that it becomes permeable to DNA, or it allows the DNA to enter inside it. So how that takes place? First of all, DNA is a hydrophilic molecule and hence it cannot cross the membrane. What is the reason? Students, DNA is present in nucleus, not in the cytoplasm, just to protect them from various enzymes in the cytoplasm which make it difficult to reach the cell membrane to pass through it. Now, where is students DNA present? DNA is present normally in the nucleus and it is not present in the cytoplasm. Now students, cytoplasm, it consists of what? Various enzymes, and these enzymes of the cytoplasm could damage the DNA and hence it is difficult for DNA to cross the cell membrane, because if it reaches the cytoplasm, what will happen? The cytoplasmic enzyme could degrade the DNA. Another reason, DNA is a hydrophilic molecule, cannot easily pass through the cell membrane unlike the hydrophobic molecule. So DNA कैसा molecule है? Hydrophilic, and hydrophilic molecules cannot easily cross the membrane like hydrophobic molecules can do. Cell membrane is made up of phospholipids and cholesterol, which makes the DNA molecule impermeable. Now cell membrane किसका बना है? Phospholipid and cholesterol का, right? And DNA कैसा molecule है? Hydrophilic. Cell membrane is hydrophobic and DNA is hydrophilic. As the cell membrane is made up of phospholipid bilayer, it makes it DNA impermeable to it. Why? Because DNA is a hydrophilic molecule. In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made competent to take up the DNA. So, अगर हमें बैक्टीरिया को प्लाज्मिड को लेने के लिए करना है, सो इफ़ वी वांट टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्लाज्मिड के साथ हमने हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच की है. सो इफ़ वी वांट टू अलाउ दैट प्लाज्मिड टू एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, सो हमें क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरियल सेल को कंपीटेंट बनाना पड़ेगा to take up the DNA molecule. So how that is done? See students, क्लोनिंग करना है. अभी हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो प्लाज्मिड के साथ अटैच्ड है, उसकी हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए. तो वो कैसे पॉसिबल होगा? जैसे जैसे जो बैक्टीरियल सेल में हम डालेंगे, सो जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, वैसे वैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी एम्प्लीफिकेशन होगा, राइट? But the question arises, how can we allow that bacterial cell to take up the recombinant DNA molecule? So students, for that various processes are there. Let us study each of these processes. So first of all, the bacterial cell is treated with a specific concentration of divalent cations such as calcium,
which increases the efficiency with which the DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. So first of all, what happens? So in this particular method, the bacterial cell is treated with divalent. Divalent यानी जिसकी valency 2 हो. So bacterial cell is treated with divalent cation. Say for example calcium. By treating bacterial cell with the divalent cation, what happens? The pores are made in the cell wall, and through these pores the DNA will enter the bacterium through the pores which are present in the cell wall. Recombinant DNA then can be transferred into such cells by incubating the cells with the recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius, that is heat shock, and then again putting back on ice. So see student, what is the procedure? पहले तो बैक्टीरियल सेल को कैल्शियम आयन से ट्रीट करना है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल वॉल है it becomes porous and it allows the DNA to enter the cell. ओके अभी सेल वॉल आ गया, अभी दूसरा पार्ट कौन सा आएगा? सेल मेम्ब्रेन, राइट. सो नाउ द DNA मस्ट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सो वो कैसे होगा? नाउ दैट DNA जो बैक्टीरियल सेल के पास रिकॉम्बिनेंट DNA है, सो कैसे करेगा? We need to incubate the bacterial cells with the recombinant DNA on the ice. So पहले हमें किस पे डालना है? recombinant DNA. It is forced into such cell. कौन सा सेल? जिसको divalent ion से ट्रीट किया है. So ऐसे DNA को हमें क्या करना है? That bacterial cell, it needs to be incubated with recombinant DNA on ice. After ice treatment, it will be followed by heat treatment. यानी उसको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? 42 डिग्री. आइस का अप्रोक्सीमेट कितना होगा? इट विल बी आइस का टेम्परेचर क्या होगा? इट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस या लेस देन दैट. ओके, आफ्टर दैट heat treatment, and after heat shock, again that bacterial cells need to be kept on the ice. So this enables the bacteria to take up the recombinant DNA. So this is one of the method through which recombinant DNA can be allowed to enter into the bacterial cell. क्या procedure है? First of all, treat the bacterial cell with the divalent cation like calcium, due to which its efficiency to which the DNA will enter into the bacterial cell increases by making the cell wall porous. After that, what will happen? We need to incubate the bacterial cell with the recombinant DNA on ice, followed by the heat shock treatment at 42 degrees Celsius, and again putting back on the ice. And in this way, the bacteria will take up the recombinant DNA. Now the other methods are, next method is microinjection. So what happens into microinjection? In this method, the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell using the capillary micropipettes or microsyringe. So with the help of micropipette or microsyringe, directly the recombinant DNA will be injected into the nucleus of the animal cell. यानी यहाँ पे host cell कौन सा है? Animal cell. So क्या करना है कि recombinant DNA का जो भी है उसे माइक्रोपिपेट या माइक्रोसिरिंज से डायरेक्टली कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे? into the nucleus of the animal cell. Next method is particle bombardment, or also called as the gene gun. So what happens in this method? So here the high velocity microparticles of gold or tungsten coated with the DNA are bombarded, or you can say shooted, into the target cell to facilitate the entry of the recombinant DNA. So basically here the microparticles of gold and tungsten which are coated with DNA
they are bombarded directly into the target cell, okay, or they are directly shooted into the target cell. This method, it is also known as biolistic or gene gun, and it is suitable for plants only. Microinjection, here the host cell were animal cell, whereas in the gene gun normally this technique is applicable to the plants only. Now another method is gene transfer through vectors. ये already हमने features required to facilitate cloning में देखा था कि जैसे TI प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड क्या करता है, होस्ट सेल के DNA के साथ compete कर लेता है. So directly हम ये vectors को use कर सकते हैं. So here disarmed pathogen, disarmed यानी वो पैथोजन कि जिसकी पैथोजेनिसिटी रिमूव की गई है. Disarmed pathogen vectors which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host cell. The other method is electroporation. Name itself suggests the pores will be made into the plasma membrane by applying the high voltage electric current. अगर हम कोई भी सेल्स या टिश्यू को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट देंगे, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बन जाएंगे, एंड दिस थ्रू दिस पोर्स, ये पोर्स टेम्पररी रहते हैं, एंड थ्रू दिस पोर्स द फॉरेन डीएनए विल एंटर इनसाइड द cell. So a pulse of high voltage electric current is applied to cells or tissues, which makes transient or temporary minute pores in the plasma membrane through which the uptake of the foreign or recombinant DNA occurs. So what is electroporation? It is a technique through which the high voltage electric current is applied to the cells or tissue, due to which the temporary pores are formed in the plasma membrane through which the recombinant DNA enters inside the cell. The next technique is LIPOFECTION. So here recombinant DNA, it is covered with fat layer. So the cell membrane allows it to pass through the particle bombardment. क्या करना है? LIPOFECTIon. DNA कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक है, राइट? अभी क्या करना है? DNA मॉलिक्यूल को फैट से लेयर से कोट करना है. Now as DNA gets coated with the fat layer, what happens? Now it becomes hydrophobic, and then this hydrophobic molecule will enter inside the cell through the particle bombardment technique. So these are the various ways through which the recombinant DNA can be inserted into the host cell. So now students, let us study in brief the processes of the recombinant DNA technology. So step wise step हम देखेंगे कि ये complete process होता कैसे है. Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence, such as isolation of DNA, fragmentation of the DNA by restriction endonucleases, isolation of the desired DNA fragment, ligation of the fragment into the vector, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host in a medium at a large scale, and extraction of the desired products. Very, very, very important, students. These are the steps, basic steps of the recombinant DNA technology. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप क्या है? डीएनए को आइसोलेट करना है. सेकंड क्या है? टू फ्रेगमेंट द डीएनए यूजिंग द restriction enzymes. Then isolation of the DNA fragment. Then ligation of the DNA into the vector. Then transferring that recombinant DNA into host. Culturing the host at the large scale. And finally to extract the desired product. So these are the various steps of the recombinant DNA technology, and we will study some of the steps in detail. See students, again I have mentioned the steps, very, very important. Isolation of the genetic material, fragmentation of the DNA by restriction endonucleases, isolation of the desired DNA fragment, ligation into the vector, transferring the recombinant DNA into host, culturing the host into a medium at large scale, and finally
extraction of the products. So these are the various steps of the recombinant DNA technology. We will study some of these steps in detail. So first of all, isolation of the genetic material. Okay, पहले तो DNA सेल के अंदर है, सेल के अंदर भी वो कहाँ पे है, इनसाइड द न्यूक्लियस. सो हमें ये DNA को न्यूक्लियस में से सेपरेट करके प्योरीफाई करना या आइसोलेट करना ज़रूरी है. So how this is done? Nucleic acid is the genetic material of all the organisms without exception. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोमोलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, what is that called as nucleic acid. Nucleic acid is the genetic material in all the living organism without exception. Yes, अभी ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो दो टाइप के हैं. One is DNA and another one is RNA. But we know that in the majority of the organism, it is the DNA which acts as the genetic material. Only there are few viruses के जिसमें RNA genetic material है. Otherwise, exception of that few virus, all the organisms will have the DNA as the genetic material. All the living organisms में न्यूक्लिक एसिड्स के दो टाइप्स है, RNA and DNA. Majority of the organisms, with the exceptions of the few RNA viruses, they have the DNA as the genetic material. So in majority of the organisms, this is deoxyribonucleic acid or DNA. In order to cut the DNA with the restriction enzyme. Okay, recombinant DNA technology का जो main step है is to cut the DNA with the restriction enzyme so that that cut DNA can be joined with the vector. But DNA को restriction enzyme से cut करने से पहले we need to obtain that DNA into the pure form, right? So it needs to be in pure form, free from the other macromolecules. So जो मेजर स्टेप है टू कट द डीएनए विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके पहले हमें डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए, विच मीन्स इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स. So for that, students, since the DNA is enclosed within the membranes, we have to break the cell open to release the DNA along with the other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids. अभी DNA membrane के अंदर है, पहले तो DNA सेल के न्यूक्लियस में है, यानी वो सेल के अंदर है. अभी सेल के अंदर है DNA, यानी हमें सेल के मेम्ब्रेन को एंड न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा. सो वी नीड टू ब्रेक ओपन द सेल सो दैट द DNA मॉलिक्यूल विल बी रिलीज. बट सिर्फ DNA रिलीज नहीं होगा, उसके साथ और क्या रिलीज होगा, RNA, प्रोटीन्स, देन पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होंगे अलॉन्ग विद द DNA. So DNA will be released by breaking open the cell, but by doing this, other macromolecules will be also released along with the DNA molecule. So how can we do this? This can be achieved by treating the bacterial cells or plant or animal tissue with enzymes such as lysozyme for bacteria, cellulose for plant cells and chitinase for the fungus. So हमें क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरियल सेल को वेरियस एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम है, अगर होस्ट से अगर डीएनए प्लांट में से निकालना है तो पहले तो प्लांट सेल को किसके ट्रीट करना पड़ेगा, सेल्यूलेस एंजाइम से. क्यों? क्योंकि उसका सेल वॉल किसका बना है, सेल्यूलोस का. सेम वे फंजाई में से अगर डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें काइटिन का सेल वॉल बना है, तो हमें किससे ट्रीट करना पड़ेगा, काइटिनेज से. So first of all, any bacterial cell, plant cell, or you can say animal cell, it needs to be treated with the various enzymes. Genes are located on the long molecules of DNA intertwined with the proteins such as histones. अभी सेल को ट्रीट कर दिया ये सब एंजाइम से. Now where are genes located? They are present on the DNA.
but along with the genes, or you can say along with the DNA, that DNA molecule is associated with the proteins. And what are those protein called as histone protein? हमने पूरा packaging देखा. So DNA is twined around what? It is twined around the histone octamer, right? A DNA molecule, it is intertwined around the histone protein molecule और histone octamer जो हमने study किया था. The RNA can be removed by treatment with ribonuclease. Proteins can be removed by treatment with protease. अभी हमें दूसरे सब मैक्रोमोलिक्यूल्स को निकाल देना है. सो हम कैसे निकाल सकते हैं? से फॉर एग्जांपल आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हम राइबोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं. प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएस एंजाइम से यूज़ कर सकते हैं. अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स. जैसे प्रोटीन्स को रिमूव करना है प्रोटीएज, लिपिड्स को रिमूव करना है तो लाइपेजेस, देन कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव करने के लिए कार्बोहाइड्रेजेस है. सो इन दिस वे ऑल द extra molecules can be removed by the appropriate treatment and we can obtain the DNA. The purified DNA ultimately precipitates after the addition of chilled alcohol. Okay, एक बार सब enzymatic treatment हो गई, बाद में finally क्या करना है? We should add the chilled alcohol, and by adding the chilled alcohol we will obtain the precipitates of the DNA. This can be seen as the collection of fine threads in the suspension. हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि DNA extract हो चुका है? So basically in the suspension we will get to see the fine minute threads, and these threads indicates that they are the DNA. So how can we obtain the purified, or how can we isolate the DNA? So first of all we need to treat the cell with the various enzyme. After enzyme we need to remove the other macromolecules, again that is the enzymatic treatment, and finally by addition of the chilled alcohol we obtain the precipitates of the DNA. See students, this is a diagram where you can see that DNA has been precipitated. This is the precipitated form of the DNA, and ये DNA को then it is removed. Okay. Now the next step is the cutting of the DNA at specific location. हमको मालूम है कि recombinant DNA और vector DNA को join करने के लिए ये दोनों DNA को स्पेसिफिक एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करना ज़रूरी है. So that is the cutting of the DNA at the specific locations. Restriction enzyme digestions are performed by incubating the purified DNA with the restriction enzyme at optimal conditions for that specific enzyme. So जो भी enzyme को optimal conditions चाहिए वो temperature conditions पे क्या करना है? DNA molecules को वो enzyme के साथ incubate करना है. After that, agar-rose gel electrophoresis is employed to check the progression of the restriction enzyme digestion. ओके, agar-rose gel से हमें मालूम पड़ेगा कि fragmentation हुआ है या नहीं. अगर restriction enzymes ने अपना काम किया होगा तो DNA fragmented हो चुका होगा, and that fragmented DNA will move further into the agar-rose gel. DNA is a negatively charged molecule, hence it moves towards a positive electrode, that is anode. The process is repeated with the vector also. यानी gene of interest and along with the vector, ये दोनों processes करने ज़रूरी है. The joining of the DNA involves the several processes. After having cut the source DNA as well as the vector with a specific restriction enzyme, the cutout gene of interest from the source DNA and cut vector with space are mixed and ligase is added. अभी हमने क्या किया? पहले स्टेप में वेक्टर को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया. नाउ आफ्टर कटिंग विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करना है? जो कटआउट जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड जो कट वेक्टर है ये दोनों को मिक्स करना है, एंड ये मिक्सिंग जब करते हैं तो हमें क्या ऐड करना है? लाइगेज एंजाइम, एंड दिस रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी क्या? इट इज़ द वेक्टर डीएनए
plus the source DNA, or you can say it is the gene of the interest. Okay, so ये दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? We will obtain the recombinant DNA. Now, the next step is amplification of the gene of interest using the PCR. अभी जो recombinant DNA बना या gene of interest जो भी है उसे हमें amplify करना है, उसकी multiple copies बनानी है. So how can we make the multiple copies of gene of interest? That technique is called as PCR, that is polymerase chain reaction. So PCR, it stands for the polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of gene of interest is synthesized in vitro using two sets of primers, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of the DNA and the enzyme polymerase. Okay. So PCR में क्या करते हैं? We will make the multiple copies of gene of interest. कैसे? In vitro, that is in the laboratory. How it is done? So we will synthesize two sets of primers. हमने now recall the DNA replication process. DNA replication में हमें RNA primers use किए थे. Same way here also we will form the primers, and these primers will be complementary to the what DNA? They will be complementary to the template DNA, or you can say they will be complementary to the gene of the interest. अभी ये जो primers बनाते हैं, these primers, they are synthesized in the laboratory and they are called as the oligonucleotides. Oligonucleotides यानी they will be the short chain. वो बहुत सारे nucleotides नहीं होंगे, 5 to 10 nucleotides का primer होगा, that is called as the oligonucleotide. And along with that we will also require the enzyme DNA polymerase. PCR is similar to the DNA replication. Difference इतना ही है कि DNA replication naturally होता है and the PCR technique is done in vitro, right? Now, the enzyme extends the primers using the nucleotides provided in the reactions and the genomic DNA as the primer. अभी ये जो DNA polymerase है वो क्या करेगी? Say for example ये gene of interest का एक strand है. Okay, listen very carefully. Suppose this is the gene of interest and this is these are the two strands of the gene of interest. Okay, now say for example प्राइमर, एक प्राइमर यहाँ पे आएगा, एक प्राइमर यहाँ पे आएगा. अब ये एंजाइम क्या करेगा? ये प्राइमर के पोजीशन से एक्सटेंड होगा. So it will move in this direction and this will move in this direction. And what will happen? The nucleotides will be added using the genomic DNA as the template. These two DNA are templates and इसके ऊपर नए नए nucleotides कौन लेकर आएगा? So DNA polymerase enzyme. Clear? So the enzyme extends the primer using the nucleotides provided in the reactions and the genomic DNA as the template. If the process of replication is repeated many times, the segment of the DNA can be amplified to approximately billion times, that is 1 billion copies are made. So अगर ये process जो replication का है उसे हम repeat करते हैं many time, then a segment of the DNA can be amplified approximately to billion times. यानी एक DNA के हम 1 billion copies बना सकते हैं through the process of polymerase chain reaction. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase. Okay, यहाँ पे एक enzyme की requirement है, that is DNA polymerase. अभी ये in vitro हो रहा है यानी laboratory condition में हो रहा है. So ये process के लिए जो DNA polymerase है, it should be thermostable. Thermostable यानी it should withstand the higher temperature. ये जो PCR का process होगा, it occurs at the higher temperature. So ये जो enzyme है, it should withstand the higher temperature. And basically जो enzyme DNA polymerase PCR के लिए use होती है, that has been isolated from a bacteria called as the Thermus aquaticus.
the DNA polymerase used in the PCR reaction is extracted from the bacteria called as Thermus aquaticus, which remains active during the high temperature induced denaturation of the double stranded DNA. अभी DNA replication के process को याद करो. So what is the first step कि जो DNA double stranded है उसे तो हमें पहले क्या करना है, क्या करना है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है, राइट. सो ये जो बॉडी में प्रोसेस होता है नेचुरली सेल के अंदर होता है, वैसा ही हम लेबोरेटरी में करने जा रहे हैं. सो उसमें भी पहला स्टेप क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड्स के डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज द डीनेचरेशन. सो ये जो डीनेचरेशन होगा प्रोसेस, इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर. सो जो भी एंजाइम यूज होगी वो it should withstand the higher temperature, and this enzyme is obtained from the bacteria called as the Thermus aquaticus. The amplified fragment is if desired can now be used to ligate with a vector for further cloning. क्या बोला कि जो भी amplified segment है, now it can be used to ligate with the vector for further cloning. से फॉर एग्जाम्पल हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, से फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल में से हमें इंसुलिन का जीन निकाली, राइट. नाउ वी नो दैट कि ये जीन की क्वांटिटी बहुत कम है, ये जो इंसुलिन का जीन मिला इट इज़ इन लेस अमाउंट. सो हमें क्या कर सकते हैं, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग द पीसीआर रिएक्शन वी कैन मेक द मल्टीपल कॉपीज, एंड नाउ दिस मल्टीपल genes can be inserted or it can be ligated with the vector and then can be used for the cloning. So students, आपकी बुक में ये प्रोसेस डिटेल में नहीं दिया है, but let us see the various steps or working mechanism of the PCR. So the first step of the PCR is the denaturation step. So what is the first step? Denaturation. What happens in denaturation? First of all, the target DNA is heated at high temperature, that is 90 to 95 degrees Celsius. Heating results in the separation of the two strands of the DNA. Each of the two strands of the target DNA now act as the template for the synthesis of new strand. This step is called denaturation. It is the separation of the two strands of the DNA by breakdown of the hydrogen bonds on heating. So what is the first step? It is denaturation. Denaturation यानी separate करना. किसको separate करना? कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जाम्पल जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इंसुलिन की जीन, वो कैसी होगी, डबल स्टैंडर्ड होगी. सो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसे we have to convert it into single strand so that each strand can be used as a template on which the new DNA molecule can be synthesized. So first of all, we need to heat the target DNA at a temperature of 90 to 95 degrees Celsius. At this temperature, the two strands of the DNA get separated. The second step is annealing. Anneal करना यानी इसका meaning है joining. So denaturation is followed by annealing. Anneal, it means to join. So during this step, two oligonucleotide primers hybridize to each single stranded DNA in the presence of excess synthetic oligonucleotide. It is carried out at the lower temperature of 40 to 60 degrees Celsius. पहले से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि ये दो पहले डीएनए कैसा था, जॉइन था. डीनेचुरेशन में हमने क्या कर दिया, दो डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिए. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों स्ट्रैंड नाउ एक्ट एज अ टेम्पलेट. ये टेम्पलेट पे क्या जॉइन हो जाएगा, प्राइमर्स. So hybridizing the primers to the template DNA or joining the primers to the template DNA, that is the second step, and this step occurs at the temperature of 40 to 60 degrees Celsius, which is the temperature lower than that which is required for the denaturation step. The next step is extension. So it is the third and final step. During this step, the enzyme DNA polymerase synthesizes the DNA segment between the primers, usually TAQ, that is Thermus aquaticus.
Tag DNA polymerase isolated from thermophilic bacterium Thermus aquaticus is used in most cases. Okay, primers attach हो गया. Say for example एक प्राइमर ये स्ट्रैंड पे आया, ये प्राइमर यहाँ पे. अभी यहाँ पे जो भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे सो दैट द न्यू स्ट्रैंड कैन बी सिंथेसाइज्ड. सो ये वाला काम कौन करता है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम करता है. The two primers extends towards each other in order to copy the segment lying between the two primers in 5' to 3' direction. This steps requires the presence of Mg2+ and it occurs at 72 degrees Celsius. So आप देख सकते हो temperature is higher and ये higher temperature पे normal जो enzymes होती है वो degrade हो जाती है, right? So ऐसी हमें enzymes चाहिए that can withstand the higher temperatures. So the tag polymerase which is isolated from the Thermus aquaticus bacteria, it can withstand the higher temperature. So these are the three steps of the polymerase chain reaction. Clear, students? The above mentioned three steps completes the first cycle of PCR. The second cycle begins with the denaturation of the extension product of the first cycle. यानी say for example initially एक ही DNA था, so उसका PCR हम करेंगे तो हमें कितने नए DNA बनेंगे? 2 नए DNA मिलेंगे, right? Now सेकेंड साइकिल में हमारे पास कितने डीएनए हैं? ये 2 डीएनए. तो ये दोनों डीएनए का क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सटेंशन स्टेप 2 cycles आर completed. If these cycles are repeated many times, the DNA segments can be amplified approximately billion times, that is 1 billion copies of the desired DNA segments can be made. If required, the amplified segment can be ligated with a vector for further cloning. So see students, this is a complete process of the DNA replication, PCR reaction. This is the region which is to be amplified, यानी कि जिसका हमें requirement है, okay. This is a double stranded DNA, one is in 5' to 3', other is in 3' to 5'. So first step is what? Denaturation. Denaturation से क्या होगा? So it is the separation of the double stranded DNA into the single strand by breakdown of the hydrogen bonds. The second step is annealing. It is the joining of the primers to the template DNA. And the next one is the extension. कि ये extension में क्या होगा? जहाँ जहाँ primers है वहाँ के आके DNA polymerase क्या करेगा? नई strand को synthesize करेगा. And then these are the cycles के ये repeat करते करते we get the amplified copies of the DNA. So the PCR. Now what is the next step? Insertion of the recombinant DNA into the host cell. जो हमने competent host के various method देखी. So next step is to insert the recombinant DNA into the host cell. That host cell may be a bacterial cell, it may be a plant cell, or it may be an animal cell. There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cell. Recipient cell, after making them competent to receive, take up the DNA present in its surroundings. So we need to make the basically recipient cell competent, and by making them competent, what will happen? The DNA can be inserted within the host cell. So if recombinant DNA bearing the genes for resistance to an antibiotic ampicillin is transferred into E. coli, the host cell become transformed into the ampicillin resistant cell. Okay, अगर recombinant DNA है कि जिसके पास ampicillin resistance gene है, normal E. coli के पास ये cell ये gene नहीं है, लेकिन हमने recombinant DNA डाल दिया जिसके पास कौन सी जीन है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. सो नाउ व्हाट विल हैपन? ये जो होस्ट ई कोलाई सेल है, नाउ दे विल बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, एंड यस देन वी कैन से कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. If we spread the transformed cell on the agar plates containing ampicillin, only transformants will grow, untransformed recipient cell will die. क्यों untransformed cell मर जाएंगे? Because normal E. coli cell does not have the property of the ampicillin resistance. हमने जो recombinant DNA जिसमें भी होगा,
they are resistant to what? They are resistant to ampicillin. Untransformed cell, they will die. Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in this case is called as a selectable marker. The next step is obtaining the foreign gene product. Okay, हमने इंसुलिन के जीन से फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल में डाल दी. अभी क्या वो बैक्टीरियल सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है वो चेक करना है. एंड यस, अगर वो बैक्टीरियल सेल अभी इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है, then we need to obtain that foreign gene product. When you insert a piece of the alien DNA in a cloning vector and transfer it to the bacterial or plant or animal cell, the alien genes get multiplied. अभी जब भी हम कोई recombinant DNA होस्ट सेल में डालेंगे या एलियन सेल में डालेंगे तो क्या होगा? वो जब भी वो सेल मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ DNA भी क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी. In almost all recombinant DNA technologies, ultimate aim is to produce the desirable protein. कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखा जाए तो उसका मेन पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन द डिजायरेबल प्रोटीन. हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस. रिकॉम्बिनेंट अपने को क्या चाहिए है कि कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेन एम क्या है कि प्रोटीन्स को बनाना. प्रोटीन्स को बनाना यानी जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने होस्ट सेल में डाला है वो डीएनए को एक्सप्रेस करना पड़ेगा. अगर डीएनए एक्सप्रेस हुआ प्रोटीन बनेगा. अगर डीएनए एक्सप्रेस नहीं हुआ इट मीन्स द प्रोटीन्स वोंट बी फॉर्म्ड. द foreign gene gets expressed under the appropriate conditions. The expression of the foreign genes into host cell involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest and having optimized conditions to induce the expression of a target protein, one has to consider producing it on a large scale. Okay, cloning हो गया, फिर प्रॉपर कंडीशंस देने की वजह से टारगेट प्रोटीन भी बन गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो जो प्रोटीन है उससे का हमें क्या करना पड़ेगा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा. इनिशियली तो हम क्या करेंगे? लेबोरेटरी कंडीशन में अगार प्लेट में या छोटे छोटे बीकर्स में ये प्रोसीजर करेंगे एंड चेक करेंगे कि वेदर प्रोडक्ट बना है या नहीं. ओके, अगर प्रोडक्ट बन गया, नाउ देयर इज द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग इट in a large amount. So how that will be done? So if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called as a recombinant protein. Say for example, इंसुलिन है. अभी इंसुलिन का प्रोडक्शन ई कोलाई सेल में सक्सेसफुल हुआ. सो अभी वो ई कोलाई, नॉर्मली इंसुलिन कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स. लेकिन हमने क्या किया? इंसुलिन के सेल को ई कोलाई सेल के अंदर ऐसी जीन डाल दी कि वो भी अब क्या कर रहा है? इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है. सो नाउ दैट होस्ट कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है, व्हाट आर दोज होस्ट कॉल्ड एज हेटेरोलोगस होस्ट. ओके, so if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called as a recombinant protein. यानी कि ई कोलाई में से जो इंसुलिन या जो प्रोटीन बन रहा है, that protein is called as a recombinant protein. The cells harboring cloned genes of interest may be grown in a small scale in a laboratory. ये सब प्रोसेस स्मॉल स्केल लैब में हो सकता है. The cultures may be used for extracting the desired proteins and then purifying it using the separation techniques. Okay, हम पहले कल्चरिंग करेंगे तो हमें DNA पर्टिकुलर प्रोटीन मिलेगा. नाउ ये प्रोटीन को हमें कल्चर में से एक्सट्रैक्ट करना है, प्योरीफाई करना पड़ेगा, राइट? The cells can also be multiplied in a continuous culture where the used medium is strained out from one side while fresh medium is added from other side to maintain the cells in physiologically most active or exponential phase. Okay, हमने सेल ग्रोथ स्टडी किया था. तो सेल ग्रोथ में हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे मैक्सिमम ग्रोथ फेज है कि जहाँ पे एक्टिव होता है, सेल डिवीजन कंटिन्यूअस होता रहता है. सो देर इज़ वन टेक्निक कॉल्ड एज कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से
we will add the new medium and from other side what can be done, जो old medium है कि जिसमें से nutrients already use हो चुके हैं, they can be drained out. So that is called as a continuous culture system, through which we can add the new culture from the one side and can remove the used culture from the other side, so that we can maintain the cell in their log phase. This type of culturing produces large biomass, leading to the higher yields of the desired protein. By continuous culturing system, we can obtain the large biomass. Small volume cultures cannot yield appreciable quantities of the product. To produce in large quantities, the development of bioreactors where large volume 100 to 1000 liters of culture can be processed was required. अभी ये तो स्मॉल क्वांटिटी में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, लेकिन अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटीज़ में करना है तो उसके लिए बायोरिएक्टर्स यूज हुए कि जिसके अंदर हम कल्चर का वॉल्यूम कितना रख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 1000 liters. So what are bioreactors? They can be thought of as the vessels in which raw materials are biologically converted into specific products, enzymes, etc. using microbial, plant, animal or human cells. Okay? A bioreactor provides optimal conditions for achieving the desired products by providing the optimum growth conditions like temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygen. So बायोरिएक्टर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस जो सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए या सेल को ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है. ऑल दोज ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस विल बी प्रोवाइडेड इन द bioreactors, such as proper temperature, proper pH, substrate, salts, vitamins, oxygen will be added. Now there are various types of bioreactors. उसमें जो widely used type is the stirring type of the bioreactors, कि जिसमें continuous mixing होता रहता है. This is a simple stirred tank bioreactor. एंड जो दूसरा वाला बायोरिएक्टर है, इट इज़ अ stirred tank bioreactor through which the air bubbles are sparged. So both of these are stirred tank bioreactors. One is simple one and another one is where the oxygen is continuously transferred to the bioreactor. अभी stirred bioreactor क्या होता है? So a stirred tank bioreactor is a cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. अभी stirred tank bioreactor जो है वो basically उसका base either it is cylindrical or it will have the curved base so that the continuous mixing of the contents takes place within that vessel. The stirrer facilitates the even mixing and oxygen availability through the bioreactor. स्टरर यानी मिक्सिंग टाइप. सो ये स्टरर क्या करता है, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मटीरियल्स एंड कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन. दिस आर द टू पर्पसेस ऑफ द स्टरर. वन इज मिक्सिंग एंड अनदर वन इज द प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. ऑक्सीजन प्रॉपर होगा तो सेल डिविजन फास्ट होगा. Alternatively, air can also be bubbled through the reactor. We can also add oxygen through the bioreactors. The bioreactor has an agitator system. Agitator यानी mixing system. Oxygen delivery system, जैसे कि ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं. एंड फोम कंट्रोल सिस्टम. फोम कंट्रोल यानी जब मिक्सिंग होगा, ये सब मटेरियल का मिक्सिंग होगा तो फोम फॉर्मेशन होगा. फोम को कंट्रोल करने के लिए, फोम को रिमूव करने के लिए भी मेथड है. There will be a temperature control system, pH control system and sampling pods so that the small volumes of the culture can be withdrawn periodically. So क्या क्या होता है, एजिटेटर सिस्टम फॉर मिक्सिंग, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए ट्यूब्स होती है, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स. ये सैम्पलिंग पोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में कल्चर्स निकाल सकते हैं एंड ये कल्चर्स को हम बाद में स्टडी कर सकते हैं. So that is the next step. And finally the downstream processing. So what is downstream processing? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, यानी कि प्रोटीन बन गया, उसके बाद के स्टेप्स.
The product has to be subjected to series of processes before it is ready for marketing as a finished product. So, marketing पहले यानी कि ये प्रोडक्ट को बेचने से पहले ये प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेजेस से प्रोसेसेस से पास करना ज़रूरी है. What are those processes? The processes include separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing. The product has to be formulated with suitable preservatives. जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्वेटिव के साथ ऐड करना ज़रूरी है. Such formulations can undergo clinical trials as in case of drugs. अभी जो भी प्रोडक्ट्स है उसको क्लिनिकल ट्रायल देना ज़रूरी है. जैसे कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई भी ड्रग्स को टेस्ट करते हैं, ड्रग्स एज इन केस हियर मेडिसिन, तो डायरेक्टली कुछ उसको यूज़ नहीं करते, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. एंड दैट इज़ ऑल्सो डन फॉर द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स. Strict quality control testing of each product is required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. को जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से प्रोसेसेस वेरी होती है. So that are the various steps of the recombinant DNA technology. I come to the end of this chapter. In the next chapter we will be studying the applications of the recombinant DNA technology. Thank you students.